today's show I am super duper excited. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं. बहुत जो मुझे शिद्दत से जिस चीज के ऊपर बात करनी है वो तो मेसी है. मेरी और टीम उसामा जीत है. गई. मेरी टीम जीत मतलब गई. सही आपकी टीम जीत गई लेकिन आपका प्लेयर हार गया शायद. गाइस ठीक है. Yeah. आप दोनों कंटिन्यू करना. मेरे अंदर एक चीज भरी हुई है. जी प्लीज. इस वर्ल्ड कप में ना मैं प्रेडिक्शंस अब नहीं मैं मेरी तरफ से प्रेडिक्शंस बंद है. Off हो गई हैं predictions तो आपकी. जस्ट काउंट मी आउट व्हेनेवर यू गाइस डूइंग इट. Yeah. जस्ट डोंट इवन लाइक काउंट मी इन. मैं नहीं कर रहा. And if you guys remember, and if you know our listeners, who are listening right now, if they remember from yesterday's show, we did say this कि predictions इस tournament में देने का अब कोई फायदा नहीं हो रहा है. फायदा ही नहीं है. कुछ भी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है. Of course, we'll break it down. Ridiculous results, bro. Yeah, and like again, पहले as football fans बड़ा मजा आ रहा था देखने में कि Yeah, अच्छा वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है, कोई Yeah. भी जीत सकता है. अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. अब मुझे हो रहा है कि यार ये कि मतलब क्या है ये कि वेदर कंडीशंस का मसला है, क्या हो रहा है. बट एनीवे आई थिंक लेट्स ब्रेक डाउन द गेम्स फ्रॉम उल्टा सीधा रिजल्ट ना आ जाए एंड में पता चला कोई अजीब सी टीम जीत रही हो वर्ल्ड कप. वो जिस टीम को आप अजीब सा कह रहे हो वो ब्राजील है उसका नाम, लेकिन वो अजीब सी नहीं है. मैं बस ये मैं क्लियर कर दूं आपको. The favorites. They're the favorites. और अर्जेंटीना अगर ऐसे बस पहुंचते रह जाएगा तो अल्लाह ही वारिस है उनका. बट एनीवे लेट्स गो. बहुत गलत बातें हो रही हैं अर्जेंटीना के खिलाफ. I'm बहुत गलत बातें हो today रही I'm हैं. pumped against Argentina and Messi. I'm pumped. But no, let's go straight into our first game. Tunisia versus France. Have to give all the credit to Tunisia. Of course, Wow. is it also Shahryar the case कि France obviously अपने full potential में नहीं खेल रहा था. If I'm not mistaken, I feel like the ace players also came from substitution बाद में. So of course they were Yeah. taking it easy. पहले से qualify कर चुके थे. But do you think? They had to rest their players, right? So they were resting their players. Right. They thought कि हाँ easy match होगा यार हम जीत जाएंगे and like Griezmann ने score कर मगर देगा. यार फिर भी यार it's France. How Exactly. How did they lose? They How, shouldn't. Man, how? But I think- एक गोल भी नहीं मार पाए यार. ये कैसे एक बात एंड में है? ग्रीजमैन का हुआ जो ऑफसाइड हो गई. Offside था. ऑफसाइड हो गया बिल्कुल आखिरी. ग्रीजमैन ने क्या सेलिब्रेट किया था ना, बहुत मतलब हाँ. वो टूनिसिया के अगेंस्ट वो ऐसा लगा इक्वलाइजर World Cup मार जीत के गया. Yeah. 98th मिनट पे सेलिब्रेट क्रेजी कर रहा था बट Golden ऑफसाइड. night. No, Golden Tunisia night. को हमें यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा. एक I तो- Yeah. think the Best. goal was also really good. The goal was really good. so- मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो वर्चुअल रियलिटी ये जो वीडियो रेफरी असिस्टेंट रेफरी जो है Yeah. this is यार ये बहुत ज्यादा ही मसले कर रहा है मैच में. नहीं but कितने वो goal deny ग्रीजमैन करेगा bro यार. Griezmann was offside by a mile. Yeah, he was. He 100% was. Massively offside. So But that was a again, a good- great game. Tunisia को हम as fan boys credit दे देते हैं. वो again मुझे बड़ा अच्छा लगता है representing Pakistan obviously, but मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई जाके दुआएं मांगता है या सजदा करता है गोल मारने के बाद. तो वहाँ भी वो एक फीलिंग थी. तो मुझे आया चलो सही है. Smaller footballing nation. Yeah, it's just a yeah. personal bias. But anyway, it was a lot of fun. The game was a lot of fun. Of course, यहाँ पर हम ज़्यादा इस पे converse नहीं करते. Only saying that because France obviously had progressed anyway. So I feel like जैसे आपने कहा अपनी टीम को रेस्ट करे थे, they weren't too concerned about it. But like Osama said, they should have still at least draw तो करते यार. Tunisia के against खेल रहे हैं, right? Then आपका हुआ Australia Denmark at the same time. Great क्या game. match था यार. मुझे यहाँ पर please एक बस चीज़ कहनी है. क्या Then you हुआ guys क्या please है comment ये on this. Australian defending for me was spot on. It really was. A मतलब वो ऐसा defensive लगा rugby खेल masterclass. रहे हैं. I'm just They were like do or confused, die. man. Yeah. और ऊपर से like who would have thought at the beginning of the World Cup कि France and Australia would qualify for the knockout rounds on the same Exactly. points. Yeah, किसने absolutely. सोचा? Absolutely. अजीब Agreed. सी बात है Doesn't बिल्कुल make यार. any sense. Australia, what if वो Australia भी goes on to Australia. win the World अच्छा Cup? नहीं come How? on come on If that Sama happens, grounded just imagine it. grounded रहे bro नहीं please. It's just weird to imagine I'll it stop कि watching Australia football. जीत जाए. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में भी इतनी मैं अच्छी football है. नहीं देखूंगा फुटबॉल फिर. में भी अच्छी हो जाएगी. क्या होगा? I तो won't- और कौन सी हॉकी sport रह गया में ऑस्ट्रेलिया. अच्छे- वो उसमें भी अच्छी हैं आई थिंक. बहुत अच्छे हैं वो. No, but again इसमें हमें क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को. And once again a very good goal. I feel like Australia और Tunisia के जो गोल थे I found them very similar. Ownership लेके one player single-handedly is going forward, making the run, taking that initiative, trying to score a goal, and again very nicely placed by both the players. Tunisia वाले game में भी और true. Australia वाले player में भी. तो it was a really good game. Sorry, आप जो कुछ कह रहे हो? ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर है लैकी जिसने Yeah. गोल किया राइट. Yeah. अजीब बंदा है. Why would you say that? Because I think he only plays in the World Cups. Okay. Right? So what happened was like 2014 के World Cup से पहले, just before the World Cup, he signed a deal with some, I think, German second-tier club, right? I can't remember the name of the club right now. But I think we can continue this conversation after the song break. We 100% We can. must. We must. But आपने जिस तरह भी Let's जिक्र do it. किया वो थोड़ा सा मुझे ओचुआ वाली फीलिंग में आ गई कि एक टूर्नामेंट में सिर्फ परफॉर्म करता है. exactly. But you're right. Let's discuss this conversation right after this song break. I think, Shahryar, you were discussing something about the Australian player. Please, go for it. Yeah, so Lakey, right, who has a big hand in Australia qualifying for the knockout rounds this World Cup. It seems like the guy only plays for in the World Cups, right?
World Cup 2014 से पहले he signed he was offered a deal from some second tier German club, right? And उसके जो reps थे उन्होंने कहा था कि नहीं, don't sign अभी right now, sign after the World Cup, आपकी value बढ़ेगी if you perform. And surely he did, right? And same thing happened just before the 2018 World Cup, last World Cup, right? Or again, उसका club career after the World Cup went downhill. Or abhi once again, he's performing in the World Cup. Guess what's going to happen now? So this is a weird, it's a very interesting fact as well for our listeners. And I feel like, of course, इसमें वो बड़ा एक important element है कि World Cup का जो pressure होता है और World Cup की जो representation होती है, वो I feel like is a whole different ball game. So probably as a player, you're like, you know, अच्छा club तो चलो अपनी जगह, but here you're representing your entire nation. It's a very big stage. Globally, leagues में तो होता है ना, German league है, Germany में देखी जा रही है. English Premier League है जो चलो मैं कहता हूँ globally चलो ज़्यादा देखी जाती है, या Spanish La Liga वगैरह. प्रेस्टीज नहीं होती ना जो वर्ल्ड कप की है. अब वर्ल्ड कप तो आपको पता है यहाँ लियारी में लोग बैठ के पे रियो डी जेनेरो हर जगह मतलब देख रहे हैं. तो लियारी इज लाइक अ mini Brazil favela. Yeah, that's what they're calling it as well. So guys, you know, you our listeners also, please let us know अभी जो शरियार ने जो information दी, if you guys agree with Shariar on 03142 898989. We do have a WhatsApp, however I'm very confused by it and I'll tell you why. This is Kurt from Lahore. Kurt, a very interesting name, reminds me of Kurt Angle. वो बस उन्होंने मैसेज किया हमें जिसमें उन्होंने लिखा है गोल 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 गोल. You know, जो Saudi Arabian commentary होती है, I think Kurt is just in the spirit of FIFA World Cup. So we really side पे ही हैं ये. Saudi के side पे लग रहे हैं तो sad होंगे थोड़ा सा. But no, thank you so much Kurt for messaging. We appreciate you messaging. उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क है. डेनमार्क पे मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा. I'm really disappointed. Me too. Yeah, I feel like they could have done Absolutely. better. Eriksen से मुझे है यार, यूनाइटेड का नाम क्यों खराब कर रहे हो? But you know, Eriksen, Christensen, they've got some quality players in there. I also just wanted to point out कि अभी हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की. मैंने बोला था कि what if they win the World Cup. Let me just tell you one fact. Please. They were in the final for the 1974 World Cup. They lost to Germany. They lost to Germany. Right. 79. 74. Yeah. Oh, yeah, 1974 exactly, man. Right. So, do you see what I'm saying? ये हो भी सकता है. What does Chacha football think? चाचा भी जो है ना थोड़े चुप हो गए हैं. Predictions देख के ना इनको भी थोड़ा upset हो गए. एक चीज मैं लेकिन यहाँ जरूर ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि ऐसे जो facts होते हैं that are based on history. Of course, I feel like in the world of football, अब शायद उसको हमें इतना नहीं मानना चाहिए because the game has changed so much. It has evolved so much. Especially like things like VAR, all of that, you know, सारी जो tactics हैं. 74 में जीते होंगे, but उस वक्त थोड़ा खुला game होता होगा, तो it must have been possible. Evolved. Have you seen that viral picture? अब फुटबॉल्स के अंदर जो वो एक स्कैनर है, हमारे प्रोड्यूसर ने चार्जिंग पे लगी हुई है पोर्ट्स पे. बिल्कुल कैसी अजीब बात है. let me just tell our what is this futuristic world में आ गए. You know, elaborate on this for our listeners and viewers on DN Sport. A picture has gone viral showing 4 footballs being plugged into power sockets on extension leads in the same way that you charge up your mobile phone. Wow. तो वर्ल्ड कप के मैच से पहले हम लोग रात में अपना फोन चार्ज पे लगाते हैं ताकि मैचेस देख सके, और ये लोग जो है रात में मैचेस से पहले फुटबॉल चार्ज पे लगाते हैं ताकि मैचेस खेल सके. Exactly. ये क्या हो रहा है? मुझे मेरा एक सवाल है इस पे. ये चार्जर कौन सा यूज करना है, USB-C या लाइटनिंग? टाइप सी कौन सा? ये आपको लगता है हम आपके चाचा फुटबॉल में भी एक स्कैनर डाल सकते हैं ताकि उनका थोड़ा और दिमाग चले, है ना? चार्जर से परमिशन लेनी पड़ेगी. बट इस पे मैंने थोड़ा रिसर्च और मैंने अपने प्रोड्यूसर्स के साथ डिस्कस किया. आई वाज लाइक व्हाट आई नो इज दैट द फुटबॉल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड मेड इन पाकिस्तान. तो ये स्कैनर्स किस तरह, यू नो, ये क्या हो रहा है? सो उन्होंने एक्सप्लेन किया. आई थिंक दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड अगेन इफ you're stating any wrong information, please do text us in on 8989 or WhatsApp us. उन्होंने ये कहा कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलके कोलैबोरेट किया इन फुटबॉल्स को प्रोड्यूस करने में. तो ऑफ कोर्स आई फील लाइक द टेक्निकल सपोर्ट केम फ्रॉम चाइना. स्कैनर्स जो बता रहे हैं जो फुटबॉल्स के अंदर मौजूद हैं, एंड देन द फुटबॉल्स प्रोबब्ली फ्रॉम पाकिस्तान. यहाँ भी हम साथ हैं, पाक चाइना. एब्सोल्युटली हम हमेशा साथ हैं, बस फुटबॉल में नहीं है अभी. दोनों अभी साथ ठीक है, अभी बस फुटबॉल में नहीं है, बट उसके अलावा हम साथ हैं. वहाँ भी साथ होंगे इंशाल्लाह. बट ऑफ कोर्स नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन अबाउट आवर मिडनाइट गेम्स. ऑब्वियसली मैं तो सऊदी अरेबिया और मेक्सिको वाला गेम देख रहा था. दूसरा गेम तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. मुझे मैं भी बताता हूँ. बट उसामा, आपसे स्टार्ट करते हैं. पोलैंड अर्जेंटीना, हाउ डू यू फील एज अ फैन ऑफ अर्जेंटीना? मुबारक. आज अर्जेंटीना ने दिखा दिया कि वो चैंपियनशिप टीम है. अच्छा, चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप विनिंग टीम? वर्ल्ड कप विनिंग, चैंपियनशिप विनिंग भाई टीम ने क्या डोमिनेशन की है. वैसे इफ यू वुड हैव वॉच्ड द मैच यू वुड हैव सीन पूरा मैच ही पोलैंड के डी में खेला गया. अच्छा, लेवेंडोव्स्की ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी.
लेवेंडोस्की तो बॉल होल्ड भी नहीं कर पा रहा था. I agree with. Lewandowski was But then nowhere again, to इससे be पहले seen. भी मैचेस में उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, इसमें भी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं हुई. पीपल आर सेइंग मेसी के बारे में कुछ चीजें. कौन Please लोग हैं बताइए. ये? Tell our बात ही listeners. है, बात ये सुबह से आते ही मुझे मेसी के बारे में तंग करना शुरू But कर tell दिया. our listeners, मैंने आपको क्यों तंग किया? मेसी ने क्या किया कल के मैच में? मेसी कुछ ने अच्छा किया तो बहुत बताएं. कुछ किया है. मेसी ने पीछे से पूरी टीम को लीड किया है. ठीक पीछे है? से? पीछे से. लीड सेंटर तो आगे से करते हैं ना ब्रो. नहीं, एक सच्चा लीडर जो है ना, वो leader. पीछे खड़े होकर अपने बंदों को देखता है और वहां से और वो आगे लेके बोलता है जाता मैं पेनल्टी मिस करूंगा, तुम लोग को प्रेशर में डालूंगा, तुम लोग तुम दो लोग गोल goal score तुम करो. लोग 2 गोल किसी You तरह guys कर read the देना, headlines. क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं रोनाल्डो तो नहीं हूँ. ये पेनल्टीज जो है ना, वो मेसी नहीं लेता, वो इजी गोल्स नहीं मारता. ठीक है, मुश्किल गोल्स Okay. No, fair enough. Apart from obviously the fanboy banter. So apparently he's the only man to miss 2 penalties In this World Cup. in the World Cup. The only man to do it. ये लो All the आपके लिए World एक Cups और है. रिकॉर्ड आ गया This अपने one मेसी के record. लिए है. This एक और one रिकॉर्ड होल्ड Yeah, कर रहा है yeah. मेसी. No, but Shreya, you tell me, obviously I would want to say कि obviously the Polish team didn't play that well. Lewandowski कहीं नजर नहीं आ रहा था उनका star player. But again, apart from Osama's bias, you think Argentina played well enough to deserve to qualify? Absolutely, yaar. They started performing when it counted, right? Right. And the Polish team के tactics बड़े boring थे. They were like just sit back and we'll see if the chance arises. वो We'll hit them एक on the counter. लेवेंडोस्की आगे खड़ा हुआ एक बेचारा. अच्छा, मगर I would give this to Poland that their defense was very good. I think their their defense was very and good. their keeper. They literally had to Emi break Martinez. through to the defense. Right. और फिर उसके आगे एक इतना अच्छा कीपर Right. खड़ा हुआ हो. नहीं हाँ बिल्कुल, मैं तो पोलिश कीपर This की was बात कर रहा the हूँ. first Yeah. 2 goals that the Polish team conceded in this World Cup. Right. First 2 goals. Wow, that's Wow. amazing. So, That's amazing. yeah. But That's a Nick, good for the the keeper, Szczesny, right? Szczesny. He, I think, performed really well. He वो has. जो उसकी एक पेनल्टी भी मिल गई मेसी को, जो obviously मेसी ने मिस कर दिया, अच्छा प्लेयर It wasn't a great penalty at but, all. But I think it wasn't, बहुत number one, गलत it wasn't बात a है. great penalty, and number two, Szczesny को वो नहीं, मतलब वो he went for the ball, हाथ लग गया मेसी को, थोड़ा weak player है मेसी, तो मेसी गिर गया. तो मेसी की जो अच्छी उन्होंने पेनल्टी सेव It की है, wasn't नहीं- a penalty in the first place. Let me just clarify that. Right. Even I It was feel a like that. penalty, Even I please. feel But like it that. wasn't because ball already head कर दी थी मेसी ने. Plus Szczesny wasn't looking at Messi. He was just diving on, to man. save the ball. And Ball पहले मेसी ने it's a receive physical कर ली sport थी. यार. It is a इतना contact तो sport है, bro. yeah, Man. इतना तो टच होना ही है. और Osama मेसी is- ऐसे गिरा ना कि मतलब खुदा ना खास्ता मैंने कहा अब छोड़ो. Contact But भी तो- anyway, I feel like the keeper Szczesny, he really established his authority He by did. saving that penalty, by Absolutely, saying कि अच्छा yeah. मैंने penalty दी, but अब मैंने save की, game is back on. अच्छा, उससे पहले भी उसकी just before the penalty somebody took a picture of the goalkeeper and he goes like, I'll do he it. did. He was like, I'll Yeah, do that's it. what I I- got this. No I got worries. this. No, उसको ना उसके absolutely. डिफेंडर्स His पीछे luck, बता रहे bro. होंगे यार ये यहाँ जाने वाला है वहाँ जाएगा. He's like I got this. I No, got that was this, bro. yeah. As fans of football, it was a Szczesny, great sight. It was a great sight. ex-Arsenal Juve player. Yeah. आराम से take it easy. Yeah. वो no, भी that मेसी was- के खिलाफ that ऐसे was a बोलना great क्या- sight. Yeah. बड़ी बात I was है really यार, बड़ी impressed. So बात है. again, Against Messi. a really good game. Then of course Saudi Arabia and Mexico be here. But before my producers kill us, let's go into a song break. do. Come right back and discuss the other games. Let's go straight into the conversation about Saudi Arabia and Mexico. आपने आज कलर भी थोड़ा joint पहना हुआ है Mexico yeah, और yeah. Saudi Arabia का mix लिए आप Realize that, दोनों के yeah. fan. But 2-1, a great game. Saudi Arabia हारते I feel like Poland को एक favor कर गया. Absolutely You true. know एक present दे गया. Christmas yeah. early Christmas present कह लें, but वो दे के चले गए, चलो ये लो तुम लोग qualify कर जाओ. But that game was a great game. एक बस उस game के ऊपर मैं बात करूंगा, फिर I want to hear what you guys have to say. Rashford से बेहतर free kick मैंने देखी. Rashford से, Wow. yeah, that's big Yeah. for me to say because United He का told me player है. this in the morning as well. Yeah. कि Yeah. Rashford से बेहतर बेहतर free kick है. मुझे लगी. What do you guys think? I'm It was a great biased. game. Yeah. Yeah, अच्छा game था. It was good. It had a lot riding on it. Saudi Arabia की भी chances थी. Yeah. Mexico. Yeah. But end में the Polish benefited from Saudi Arabia, I Yeah. guess. Yeah. So मतलब वैसे तो मेक्सिको जीता बट एक गोल की वजह से यार, एक गोल की वजह से सऊदी अरब के क्या हो गया यार ये. आई मीन अच्छा वैसे आई फील लाइक सऊदी इज a good team now. I feel They are, yeah, they are. I mean like मतलब अगर आप बोल रहे हो अर्जेंटीना का जो फैन है, अगर कह रहे हैं साउदी इज अ गुड टीम, it just Then it must be a good I'm also team. a fan of football, Right, right? right, So right. if I see quality football, I'm gonna like it. makes sense. True. Makes sense. Yeah. ठीक है और expect seeing that from Saudi Arabian Unbiased हो गया players, boy. Saudi Unbiased, Arabian unbiased. players, wow man. And I just अभी तो रोनाल्डो को भी वो offers दे रहे हैं.
I think what is gonna जब किसी happen. का प्लेयर पेनल्टी मिस करते वो अनबायस हो जाता है शरियार, वो हो जाता है, वो हो जाता है, उसके पास और कोई रूट नहीं होता जाने का जिंदगी में. हम देखते हैं. बट नो अगेन अमेजिंग गेम्स. बहुत मजा आया मेक्सिको और सऊदी अरेबिया का गेम देख के. जब मैं अर्जेंटीना और पोलैंड की गेम में वापस गया, चैनल स्विच किया, तो आई रियलाइज अच्छा पोलिश टीम हारी है लेकिन सेलिब्रेट कर रही है अर्जेंटीना के साथ, क्राउड के पास जा रही है. बट ऑफ कोर्स वो खत्म हुआ, उनको पता चला होगा कि सऊदी अरेबिया ने एग्जैक्टली एक गोल स्कोर किया एंड यू नो पोलिश टीम वैसे आगे भी चली चल ही गई. रहे थे, दोनों मैचेस साइमल्टेनियसली चल रहे थे. एक फैन बैठा हुआ था, वो अर्जेंटीना के मैच में स्टेडियम में बैठ के देख रहा है और दूसरा मैच फोन पे बैठ के देख रहा है. स्टेडियम में चल रहा है इस तरह से यार. I do feel bad for Mexico though. You know the commentator. Goal difference पे. Yeah, the commentator very clearly said जब उन पे गोल हुआ सऊदी अरेबिया ने कंसीड किया, उन्होंने बोला कि यार मतलब हाय किस तरह ये हो गया, बेचारे इतनी मेहनत कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, अपनी पूरी मतलब जितनी भी जान थी सब लगा के, बट दे जस्ट यू नो कंसीडर्ड दैट गोल एंड दैट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट. आई फेल्ट बैड एज अ फैन ऑफ फुटबॉल, आई फेल्ट बैड फॉर देम. वो भी गोल मेरे ख्याल से स्टॉपेज टाइम में ही आया. एग्जैक्टली, एंड वही लंबा चौड़ा स्टॉपेज टाइम, यू नो. बट अगेन कंपेयर्ड टू पोलैंड, मुझे ऐसा लगा मे बी दे प्रोबब्ली शुड हैव यू नो प्रोग्रेस्ड ऑन पेपर. और पोलिश टीम से बेहतर मुझे लग रहा है. Even I would say that Poland did not deserve to come through. They didn't play good football at all. Did. I 100% agree. To our listeners and our viewers on DN Sport, एक दफ़ा राउंड अप कर देते हैं हमारे अब जो गेम्स हैं. अब यहाँ से यू नो येस्टरडे से लेकर अभी तक जितने भी गेम्स हैं सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, सब बहुत क्रूशल हैं. आज हमारे पास अगेन वही चीज़ है जो कल थी. 8 बजे 2 मैचेस हैं. देयर आर 2 गेम्स. क्रोएशिया वर्सेस बेल्जियम इज द फर्स्ट वन. Then there's Canada versus Morocco at the same time, 8 p.m. Then at midnight we have 2 games again. Japan versus Spain. Costa Rica versus Germany. Before you guys, you know, tell us about this, मैं एक बात बता दूं, हमारे प्रोड्यूसर ने अभी ब्रेक में अपनी प्रेडिक्शन दे दी है. उन्होंने बोला है कि स्पेन फाइनल में जाएगी. यहाँ तक तो उन्होंने बोला था कि स्पेन और पोर्चुगल का फाइनल होगा, बट शी इज बैंकिंग के स्पेन तो फाइनल में जाएगी. You never know. You never know. In this World Cup, you cannot predict anything, yaar. Yeah. So हो सकता है. anything can happen. Yeah, true. Like I was saying also in the while we were on the break, I said that Spain also उनकी एक केमिस्ट्री बन गई. They gelled in very quickly. So इतने बड़े गोल मार्जिन से भी जीत रहे हैं. Great manager, man. Exactly. Enrique. Yeah. और इसी तरह से we've seen, like I think I saw Argentina gel in yesterday's match. McAllister. तो वही केमिस्ट्री उनकी भी आना शुरू हो गई है. And I would give them credit to you know they're stopping relying on Messi now. Which is a great which thing. is a good move. That was needed. Yeah, that was needed. That is needed for a team. वही वाली बात है, एक बंदे के ऊपर नहीं वो नहीं होता एक ग्रुप स्टडीज में लाइक एक ही बच्चा पढ़ रहा होता है, राइट? प्रेजेंटेशन भी वही देता है, मेहनत भी वही करता है, सारी काम एंड में ग्रेड सबको मिलता है. मैं हमेशा ऐसा कहता हूं. सो अभी मैकैलिस्टर और अल्वारेज ने मेहनत की एंड यू नो सो ग्रेट. और उसका बेनिफिट मेसी को हो गया बगैर कुछ किए. बिल्कुल सही बोला आपने शरियार. आई कंप्लीटली एग्री विद यू. आपने बिल्कुल सही बात की. किंग है वो. ही डज नॉट हंट फॉर ग्लोरी. Okay. That was well said. I think I agree with him. जिस तरह इसने रोनाल्डो की इतनी अच्छी बात की कि किंग है वो, he does not seek glory. बहुत अच्छा लगा मुझे लगा. ये बहुत अच्छा लगा मुझे. I meant Messi. अच्छा, one thing we should tell our viewers and our listeners right now कि you know अभी तक जो मैचेस कंफर्म्ड हुए फॉर द नॉकआउट राउंड्स आर USA and Netherlands. Right. Saturday को होगा. Great game. अर्जेंटीना को बहुत मजे का टाइम मिला है ब्रो. ऑस्ट्रेलिया, राइट? सो अर्जेंटीना विल हैव फन. I hope हिस्ट्री वो उल्टा सीधा कुछ ना हो जाए फिर से इसी सोच में. I don't think so. I think ऑस्ट्रेलिया आ गई है. वही वाली स्मूथ विन हो. वही वाली सोच नहीं लेकर आए जिस तरह से सऊदीया के साथ लेकर आए थे. नहीं, they'll have a smooth win. मेसी के पास चांस है ब्रो हैट्रिक मारने का. But no, शरिया की आप बताना और कौन से हमारे पास अभी उसके बाद है. वी हैव फ्रांस अगेंस्ट पोलैंड. Poland will be swept aside मजे से by France. Agreed. You know, because France will be playing their starting lineup. Yeah. उसके बाद England and Senegal. So जिस पे ओसामा ने ब्रेक में प्रेडिक्ट किया है कि सेनेगल might just give a very big upset to England. Yeah. नहीं. England बड़ी गेम्स हार जाता है. I'm expecting them to lose this. That's a very interesting statement. I would request our listeners on 89 to please, send us in. Yes, please. Osama ने अभी statement दे दी है कि England Senegal से हार जाएगा. Please text us in WhatsApp 03142898989. And if you guys don't text us, then we'll just assume कि you guys agree with Osama. And that is not a good approach क्योंकि I don't agree with Osama. Even though again I don't like England so much, but I feel like it'll be not a smooth victory, but I think they'll take it. Definitely, it won't be a smooth victory, even if
England does go through, अब it won't be a smooth देखो, victory. अब डिपेंड करता है हैरी मैग्वायर का क्या मूड है ओन गोल्स मारने Harry का मूड Maguire को है तो घर पे बिठा के आना चाहिए. But no, I think we should discuss the Croatia and Belgium game as well, because that's obviously a do or die, a very interesting game. Good but game. let's do that right after this song break. Welcome back to Kickoff on City FM 89. I feel like we should get straight to a very important conversation. But before that, हमने जो अभी आपने openly challenge किया था listeners को, somebody has come out in your किसी ने support. मुझे challenge- They नहीं, have आपके responded. support में आए हैं. Yes. So we have Qamar Zaman from Karachi. Thank you for texting in, Qamar. उन्होंने कहा Senegal may upset England. Agreed with Osama. Your show is great. Ooh. Thank you Zaman, so much for messaging. Thank you so much for agreeing with me. Also, he appreciates football. Thank you, Qamar Zaman. ये उसामा ने बोला चलो कोई तो मुझे सपोर्ट कर रहा है इस पॉडकास्ट में नहीं है शो में नहीं तो कोई मुझे सपोर्ट तो कर रहा है कमर जमान आपको सपोर्ट कर रहे हैं नो शाउट आउट टू कमर आई थिंक इधर फिर एग्री करना पड़ेगा यहाँ तो 2 ऑल हो गया मैं और शरियार कह रहे थे ऐसा नहीं होगा उसामा एंड कमर कहते हैं ऐसा होगा तो 2 ऑल हो गया अभी तक देखते हैं क्या होता है सुपर डुपर एक्साइटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑफ कोर्स हमने आज के 4 मैचेस डिस्कस किए हैं क्रोएशिया बेल्जियम कनाडा मोरक्को जापान स्पेन कोस्टा रिका जर्मनी बट ये वही वाली जो हम बात करते हैं जो क्रिकेट वाले वर्ल्ड कप में भी इफ यू गाइस रिमेंबर एंड लिसनर्स रिमेंबर वो हुआ था ना कि इधर से ये हो जाए इधर से वो हो जाए हाँ कुदरत का निजाम तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह क्या वर्कआउट करेगा सो सब कुदरत Japan need a win against Spain to cement their place. It's a win or bust showdown. In the last 1 year, Spain has been a block for Japan in both men's and women's football tournaments. ये एक additional fact. Spain will qualify for the round of 16 with either a win or a draw. Costa Rica can reach the last 16 by defeating Germany. फिर उसके बाद ये भी है कि Germany must pick up 3 points to stay in the race. I feel like Germany पे काफी ज्यादा प्रेशर है. You know, आमिर नसीर ने मैं पहले भी डिस्कस किया ये कि उन्होंने शो में आके हमारे सैटरडे को बोला था कि जर्मनी तो पहुंचे जर्मनी तो निकलेगी ही निकलेगी. तो so let's see how that goes. Yeah, but Germany also need to hope कि Spain beat Japan. Exactly. If they beat Costa Rica and Spain beats Japan, only then do they So many qualify. variables, huh? Exactly. वही होगा. Crazy. अपने मैच पे फोकस करें या फोन पे देखते रहेंगे मैनेजर से पूछते रहेंगे क्या हो रहा है भाई पिछले मैचेस में. And what about us the fans? Like हम कौन से मैच पे फोकस करें? हमने तो सारे मैचेस देखने हैं. मैं ऐसे घूम रहा होता हूँ बस टीवी पे और सोशल मीडिया पे कि भाई किस किस का मैच देखे. 3-4 फोन ना सामने ही रखे हुए होते हैं सारे मैच. Exactly. देखने अम्मा आती है कमरे में कोई आता है बोलता है ये हो क्या रहा है बच्चा पागल हो गया. 3-4 फोन की just need 2 phones bro. यार वही ना that's एक true, टाइम that's पे true. रखने पड़ते हैं. ये अलग से एक फोन रखते हैं जिसमें और मेसी असल का में- वॉलपेपर बस देखते रहते हैं असल में 24 मेरे घंटे. फोन में ना आवाज नहीं आती है तो आई नीड द अदर फोन फॉर Third world वॉल्यूम. problem. Then obviously there's Morocco. They are through if they have a win or a draw. Defeat would leave them needing Belgium to overcome Croatia. Belgium will qualify for the round of 16 with victory over Croatia. Defeat will see them knocked out. बहुत difficult है. Let's I don't see. see them winning against Croatia. These two Let's groups see जो आज what- 4 मैचेस हैं, I feel like it's an open for all kind of a situation. बुफे लगा हुआ है जो पहले आ गया. अगर if Belgium wants to win today is KDB day. Yeah. Your midfielder bro. Yeah, absolutely. Yeah. Yeah. I have lots of hopes from KDB. I But hope then he again, performs. KDB के अलावा कौन है? Lukaku doesn't look fit at all. He looks chubby. He looks unfit. He Hazard doesn't look- isn't doing much. Hazard's gone. दोनों भाई जो हैं वो इतना ज्यादा कुछ कर नहीं रहे. Torgan भी, yeah. they're दूसरी not साइड पे doing much. फ्लूका मॉड्रिच बैठा हुआ है. फ्लूका मॉड्रिक तो ये नाम फेमस कर दिया मेरे भाई ने. यार. मुझे लग रहा है आज या तो मॉड्रिच परफॉर्म करेगा या केडीबी परफॉर्म करेगा. ये मुझे लग रहा है. वो मिडफील्ड में बैटल अच्छी होगी. मिडफील्ड का बैटल होगा. Yeah. Actually, I think that's a great way to put it. Tonight's game would be a midfield battle Modric between versus Modric. KDB. Absolutely Yeah. agree. एक दफा राउंड अप दे देते हैं शरियार and Let's do Osama that. about the groups. I think Sure, that is sure. very necessary for our listeners. So again, Netherlands, Senegal have qualified. शरिया आपने जैसे मेंशन किया. England, USA qualified. राउंड ऑफ 16 में मौजूद हैं. अर्जेंटीना, पोलैंड राउंड ऑफ 16 में मौजूद हैं. फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया राउंड ऑफ 16 में मौजूद हैं. स्पेन, जापान वाला जो ग्रुप ई है दैट्स ओपन फॉर ऑल. आज पता चलेगा हमें ग्रुप एफ जो क्रोएशिया, मोरक्को, बेल्जियम, कनाडा वाला ग्रुप है वो भी हमें आज पता चलेगा. ग्रुप जी, ब्राजील हैज क्वालिफाइड. दे आर गॉन ऑन टू राउंड ऑफ 16. देन यू हैव स्विट्जरलैंड, कैमरून, सर्बिया where I think Switzerland probably has a greater chance than the other two. This They is still just have my... to- they still have to battle it out. So I let's don't see. know man. Yeah. Serbia has enough in them कुछ भी हो to सकता है यहाँ भी defeat कुछ भी हो सकता है. Switzerland, Fair yeah. enough. Then we have Portugal obviously has qualified. Then we have Ghana who has been performing, who has been like really bringing their A game. absolutely. तो यहाँ पर as a fan of football मुझे काफी खुशी होगी अगर साउथ कोरिया और यूरुग्वाई की जगह घाना पोर्चुगल के साथ क्वालिफाई कर जाती है. I feel like they deserve it and they should take it forward. I Absolutely. still want Uruguay to be in the Round of 16? Yeah, or are they knocked out? I think अभी भी उनका एक गेम तो रहता है. They okay. are on 1 point. Ghana is on 3 points. तो वही बात They can है. make it. They can अभी make it. अब वही पता बात नहीं, है. अब इस ग्रुप में कुदरत भी का निजाम कुछ हो जाए बिल्कुल तो पोर्चुगल वही को वाली अपने बात ग्रुप है, से yeah. हटा दे, ब्राजील को अपने ग्रुप से हटा दे. Then the other 3 teams I feel like somehow It's basically between Ghana, South Korea, and Uruguay. Absolutely. Right? Absolutely.
Wow. Yeah, looking forward to it. Again, you know, these games, these next few days for बता football. सोए कब यार सोना तो है नहीं ना, वही मैं आपको कह रहा हूँ, सुबह हम ऑफिस आते हैं, हमारे बॉस ऐसे देख रहे होते हैं कि मतलब ये हो क्या रहा है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, क्या हो रहा है. But again, that's why we're the fan boys, and this is our season. वर्ल्ड कप का सीजन है, वर्ल्ड कप का फीवर है भाई. हम क्या करें, हम लेट सोएंगे और लेट उठेंगे, कुछ नहीं हो सकता. कर लो जो नहीं ऐसा नहीं, जॉब से निकाल देंगे. But anyway, point being, I think ये जो बाकी हमारी डिस्कशन है काफी इंटरेस्टिंग होगी, स्पेशली इन टुमारोज शो, क्योंकि आज भी टीम्स निकल के सामने आ जाएंगी, तो राउंड ऑफ 16 में और फिल हो जाएगा. Exactly. And then obviously कल फिर और मैचेस हैं, and it should sort of establish कि राउंड ऑफ 16 में कौन जा रहा है. ये कॉन्वर्सेशन हम फिर कल के शो में कैरी इट इन टुमारोज शो एट 4 PM. अभी थोड़ा हम एग्जिट कर देते हैं शो को, ताकि हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो हमें ये ना बोले कि आपने थोड़ा नैप ले लूं, ओवर टाइम कर दिया. But anyway, so yeah, this is Kickoff. I am Ibad Ali Shah. I am Shayar Khurram. And I am Osama Arshad. And We are the Fan Boys. Signing out.